everyone. Today we are going to learn about the perfect tenses. So perfect tenses are, that is our chapter number 17, present perfect tense and past perfect tense. So before learning about the perfect tenses, let us try to understand what does the tenses mean. Tenses. So tenses mainly depend on two things, that is time and work. These two are the basis for the tenses. Now tenses का मतलब क्या होता है? Tenses यानी इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है, वो कितना हुआ है, कितना हो रहा है या कितना हो चुका है. ये सब चीजें हमें टेंसेस से पता चलती है और सर्टेन रूल्स है जिसे फॉलो करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि वो टेंस कौन सा है, यानी वो काम कब हुआ है या कब हो रहा है. चलिए अब हम जानते हैं जो मेन बेस है अपने टेंसेस का, दैट इज टाइम एंड वर्क. उसके बाद टाइम के बारे में हम सबको पता है. वैसे भी टाइम 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज आवर प्रेजेंट टेंस, and past tense and future tense. Okay, now present tense. Present tense यानी जो काम अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. past tense यानी जो काम ऑलरेडी हो चुका है. and future tense यानी जो काम होने वाला है, यानी भविष्य में जो काम फ्यूचर में जो होने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस. नाउ कमिंग टू द टॉपिक वर्क यानी काम. ऐसे तो काम 3-4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस के बारे में. अभी हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस. इसमें जो टाइप है वो परफेक्ट टेंस का टाइप और कंटिन्यूअस का टाइप भी सीखेंगे. Continuous tense जो हमने already which we learned in our class. So just to refresh that continuous tense, I am just giving a few brief explanation of continuous tense as well as our main topic, which is perfect tense. So coming to the continuous tense, continuous यानी जो काम लगातार चल रहा है. Continuous में mainly हम ing ऐड करते हैं. ing, that is ing हमारा मेन बेस है कंटिन्यूअस टेंस के लिए. जैसे और ing यानी जो काम लगातार चल रहा है. ing से हमें पता चलता है कि वो काम लगातार चल रहा है. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूं रीड प्लस ing, that is reading. Reading, going, listening, watching, reading, ये सब अपने कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे. नाउ कमिंग टू द टॉपिक परफेक्ट टेंस. परफेक्ट वर्ड से हमें पता चल जाता है कि वो काम परफेक्टली हो चुका है, यानी वो कंप्लीटली हो चुका है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, वो अधूरा नहीं है. दैट इज परफेक्टली कंप्लीटेड. एक टाइप का वर्क है हमारा परफेक्ट टेंस. नाउ जस्ट थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए अगेन आई विल रिफ्रेश. दैट इज हमने सीखा टेंसेस की डेफिनेशन, यानी टेंसेस होता क्या है, और टेंसेस जो मेन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज टाइम जो अपने 3 टाइप्स के हैं एंड वर्क जो 3-4 टाइप्स के हैं. बट फॉर नाउ वी आर लर्निंग ओनली कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट. टाइम एंड वर्क इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक which is base for our perfect tense. अभी हम पढ़ते हैं मेन वर्ब के बारे में. ओके, मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है परफेक्ट टेंस को जानने के लिए. मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन verb, second form and third form. These 3 forms are of the main verb.
मेन वर्ब की 3 फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा गो, सो ये हुई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकेंड फॉर्म हुई वेंट एंड थर्ड फॉर्म हुई गॉन। सो एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया था गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड फॉर्म है गॉन। तो जब भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, जब भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं तो वो कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो कंटीन्यूअस टेंस अपना क्लियर हो गया। कमिंग टू द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का अपने आप में मीनिंग ये होता है कि वो कंप्लीटली हो चुका है। जैसे गॉन, वो जा चुका है। सो जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो वो काम परफेक्ट टेंस का होता है, यानी वो परफेक्टली हो चुका होता है। सो अपने मेन वर्ब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी का यूज होता है तो वो कंटीन्यूअस होता है, एंड जब भी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो अपना परफेक्ट टेंस होता है। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब जो काम प्रेजेंट में परफेक्टली हो चुका है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ हम एग्जांपल से जानते हैं। जैसे मैं कह रही हूं मैं खाना खा चुकी हूं, मैं खाना खा चुकी हूं। और एग्जाम्पल के लिए रेखा अपने आप को न्यू लोकेलिटी में एडजस्ट कर चुकी है। तो जैसे मैंने कहा मैं खाना खा चुकी हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखते हैं आई। एग्जाम में अपनी हेडिंग हमें इस टाइप से देंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो द क्वेश्चन विल बी आई डैश eat the food। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बट बिफोर सेइंग दिस एग्जाम्पल, okay, before saying this example, I will give you one rule formation which is very necessary to learn the present perfect tense, which is present perfect tense को फॉर्म करने के लिए एक रूल है। वो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा रूल है, अगर ये रूल हमने तरो कर लिया तो हमें परफेक्ट टेंस सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो द रूल इज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, बट बिफोर सेइंग द एग्जांपल विल गिव यू अ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हैज और हैज हम सिंगुलर नाउन्स में यूज करते हैं और हैव हम प्लूरल नाउन्स के यूज करते हैं। बट ये बात हमें याद रखनी है कि आई के साथ कभी भी हैव का यूज भी होता है। सो हैज वी आर यूजिंग फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड हैव वी आर यूजिंग फॉर प्लूरल नाउन्स। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज, जैसे मैंने कहा मैं खाना खा चुकी हूँ। सो इंग्लिश ट्रांसलेशन इज आई डैश ईट द फूड। This is the way the question will come. I dash eat the food. So we will just tally this with the rule formation, which is I is our subject. Then it's blank is there. We have to put has or have. I के साथ किसका use होगा? Of course have का use होगा.
So I have. Next is main verb. Main verb they have provided us eat. So हमें पता है कि perfect tense and that is present perfect tense में main verb की third form यूज होगी. So eat की third form क्या हुई? Eat is the first form, ate is the second form, and eaten is the third form. So I have, subject is completed, helping verb is completed. Now main verb. तो eat का third form क्या है? Eating. So I have eaten and the object is given the food. So it's clear for us. I have eaten the food. I have eaten the food. We can tally this. Subject is I. Then the helping verb we have used have because we have to use have with I. Then our main verb का third form use होता है perfect tense में. So eat का third form है eating. और ऐसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्ड फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म वो हम आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे जो आपके रेफरेंस के लिए काम आएंगे. सो फॉर डाउन ईट का थर्ड फॉर्म हुआ ईटिंग एंड देन द ऑब्जेक्ट इज द फूड. आई हैव ईटन द फूड यानी मैं खाना खा चुकी हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे मैंने कहा रेखा. रेखा अपने आप को न्यू लोकेलिटी में एडजस्ट कर चुकी है यानी वो एडजस्ट कर चुकी है. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? जैसे रेखा हैज एडजस्टेड टू लिविंग इन द न्यू लोकेलिटी. सो हाउ द क्वेश्चन विल कम इज रेखा डैश एडजस्ट टू लिविंग इन द न्यू लोकेलिटी. Okay, so how we can like fill this gap is filling the blanks with present perfect tense. So Rekha is the subject. Then you have to use helping verb. So Rekha is a singular noun. So of course we will use has. So we are using has here. Rekha has. Then main verb की third form. Main verb की third form हमें use करनी है. So adjust की third form हुई adjusted. Adjusted. Okay. So Rekha has adjusted and the object is to living in the new locality. So यहाँ पे अपना concept clear होता है about the present perfect tense. One more time I will refresh. Rekha has adjusted to living in the new locality. यानी रेखा अपने आप को न्यू लोकेलिटी में एडजस्ट कर चुकी है. सब्जेक्ट हमने डाला, सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, हमने हेल्पिंग वर्ब डाला, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये हमें याद रखना है कि परफेक्ट टेंस में कभी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूसेज होता है क्योंकि परफेक्ट टेंस है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है यानी कुछ बाकी नहीं है उसमें, दैट इज फुली कंप्लीटेड. सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. सो एडजस्ट की थर्ड फॉर्म हुई एडजस्टेड and the rest of the object is to living in the new locality. So now our concept of this present perfect tense is clear. Now let's come to the next topic, that is past perfect tense. Past perfect tense और present perfect tense में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है. The rule formation is almost same, but helping verb will be different. अगर हमने ये जो rules formation याद कर लिए तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में. एग्जाम्पल के लिए अब जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो फर्स्ट हम इसका रूल फॉर्मेशन देखते हैं. उसका रूल फॉर्मेशन है सेम सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस यानी वो काम पास्ट टेंस में परफेक्टली हो चुका है, कंप्लीटली हो चुका है. यानी जिस सेंटेंस से जताया जाए कि वो काम पास्ट में परफेक्टली हो चुका है उसे बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. सो पास्ट परफेक्ट टेंस में द रूल फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस हैव. इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें हमें डिफाइन करना पड़ता था कि हैज सिंगुलर के लिए यूज करना है और हैव प्लूरल नाउन्स के लिए यूज करना है. बट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे लिए इजी है. इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, दैट इज हैव. सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म
ओके, देन ऑब्जेक्ट। ये अपना रूल फॉर्मेशन है। ये रूल फॉर्मेशन हम याद करेंगे तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई विल जस्ट रिफ्रेश। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। सो इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे मैं बोलती हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने काम कर लिया था, यानी मैंने काम कर लिया है, अभी उसमें कुछ बाकी नहीं बचा है। मैंने काम कर लिया था, मैंने फिल्म देख ली थी, तो ये सब क्या है अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल है। या फिर वन मोर एग्जांपल इज जैसे मैंने लास्ट वीक जो हमारे न्यू कमर्स आए थे उनके साथ मेरी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो ये सारे सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। अभी हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। सो द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज, जैसे मैंने कहा मैंने काम कर लिया था, सो आई हैड डन माई वर्क। So the English translation is I had done my work. So how the sentence is framed is subject है अपना I, then हमने helping verb use किया of course past perfect में had, and the main verb जो bracket में दिया हुआ था that is do. So what is third form of do? Of course done, and the rest of is the object. Okay, so the sentence is I had done my work. मैंने मेरा काम कर लिया था। And the next sentence is मैंने फिल्म देख ली थी, यानी मैंने फिल्म देख ली है, वो पास्ट में परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। I had seen the film. I had seen the film. So मेन वर्ब जो ब्रैकेट में हमें दिया है that is see. Okay, so I dash the film. This is the way the question will be asked in the exam. So I is a subject, then fill in the blanks with past perfect tense. So जब भी हम बोले कि fill in the blanks with past perfect tense, हमारे माइंड में वो क्लियर होना चाहिए कि जो वर्ब हमें यूज करना है that is had. So I is a subject, had is a verb, then main verb का third form. Main verb का third form. So see का third form, of course that is seen. I had seen, and the rest of sentence is the film. I had seen the film. यानी मैंने फिल्म देख ली थी. Okay. So now we are clear cut with our concept about the present perfect tense and past perfect tense. So that's all. Our today's topic is completed. So I'll just refresh and I'll just say the rule once again. To form, first we should know what is tenses. यानी tenses की definition. Tenses जो main दो type पे depend करते हैं, that is our time and verb. Then usage of our main verb, that is the first form, second form, third form. Because without knowing about the main verb, we can't proceed forward. So we are already aware of the concept main verb, first, second, third form. After knowing about the main verb, we learned about the present perfect tense का rules. जो rule formation है, that is subject plus has or have, which is the helping verb, which are the helping verb used in the present perfect tense. Then plus main verb का third form, and then object. And the rule of past perfect tense is subject plus had plus main verb का third form plus object. Okay, that's all for today. Thank you so much.